Assalamu alaikum, adab, good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you so much. It's such a special afternoon, such a special moment for all of us. NAPA Talks एक हमारी सीरीज़ है जो कि हमने लास्ट ईयर जिसका आगाज़ यहाँ पे किया था, जिसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर भी इनवाइट स्पीकर्स. पर आज की जो NAPA Talks है, this is very, very special. And you all know why. We have a guest here जिनको सुनने के लिए बहुत लोग बेचैन और बेताब बहुत ज़माने से. And in the last, she was telling me in the last 25 or so years, this is just her third visit to Pakistan. So it's not every day. It's not every day that Dr. Azra Raza comes to Pakistan and talks to you in person, right in front of you. But so she had a talk at Habib University, and she was very, very overwhelmed by the response that she received over there. कि capacity से शायद 10 times ज़्यादा वहाँ पर लोग थे in different parts of the campus. So, but you know, सब कुछ लोग होते हैं जो इतने उनके अंदर की सलाहियत होती है, उनकी गुफ्तगू में, उनकी बात में इतना सब्सटेंस होता है, इतनी गहराई होती है और दिल को छूने वाली बात होती है कि it hits you right there and you want to hear those words. National Academy of Performing Arts, NAPA, as you all know and all are well aware, it's an educational and training institution where we provide education and training in the domains of performing arts, that is theatre arts and music. These are the two departments that we have where we are offering a 3-year diploma program. So हमारे यहाँ students आते हैं यहाँ पे 3 साल का बहुत ही intensive program है जो attend करते हैं, जिसका objective है to make them a performer. और आगे जाके जब यहाँ से निकलते हैं तो फिर अपने लिए राहें तलाश करते हैं. A lot of our graduates are now working in the industry, earning laurels for themselves, for the institute, for the country. And it's always heartening to see our graduates everywhere now working in the industry. NAPA is governed by a very, very able and credible board of directors, and I'm so honored that some of our board members are present here. This afternoon, our chairman, 𝗧𝗹𝗸𝗀 is here, 𝗧𝗹𝗸𝗀 is here, Tariq Rahmani Sahab is also here, Fawzia Naqvi is also here, Anwar Ramal Sahab is here. Thank you, all of you. And 𝗧𝗹𝗸𝗀 Sahab is here. Of course, he's sitting right. Senator retired 𝗧𝗹𝗸𝗀 Sahab. I hope a couple of others also join us. Thank you, all of you. Thank you for your guidance, for your mentoring, for your support, for your engagement, जिसकी वजह से हम सबको ये मौका मिलता है कि हम आप लोगों से सीखें और इसको आगे लेके और चलाएं. इस इदारे की बुनियाद ज़िया-उल-मुहिद्दीन साहब ने रखी थी 2004 में जब नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कायम हुई. सो नेचुरली ज़िया-उल-मुहिद्दीन साहब से बेहतर जब एक बात परफॉर्मिंग आर्ट्स की हो तो कोई शख्स इस मुल्क में, क्या इस खत्ते में शायद नहीं था कि जो उसकी बुनियादें रख के और उस इदारे को चलाता. सो इसकी फाउंडेशन जो सॉलिड है, जो नज़र आती है, दिस इज़ द नर्सरी नाउ दैट फीड्स द इंडस्ट्री. तो उसमें वो सारी काविश, सारी मेहनत ज़िया साहब और उनकी टीम की है, जिसमें बहुत सारे हमारे बड़े बड़े नामों ने काम किया. आज की टॉक डॉक्टर अज़रा रज़ा के साथ, वी आर सो ऑनर्ड. I have known Azra Abba for the last few years, and COVID से पहले we have been in contact. जब मैं इनसे ये बात करता था कि हम आपको बुलाएंगे और आपकी talk arrange करवाएंगे, little did I know, little did she know कि उस conversation जो हम करते थे उसकी culmination नापा में होगी आज के दिन यहाँ पे. But in the last few years, thanks to social media, thanks to YouTube, Dr. Azra Raza is now an international celebrity. और गो के वो कहती हैं कि I'm just an oncologist, I'm just a doctor, but she's much more than that. She's perhaps the rock star of oncology. And such an honor it is that she is here. जो आज का टॉपिक जो टाइटल भी डॉक्टर अज़रा रज़ा ने चूज़ किया,
sweet poetry that medicines all pain. So what is the pain that she's talking about over here? वो आपके सामने यहाँ पे आके बात करेंगे. And the format is that I'll invite her right now. She'll come, she'll give a talk. उसके बाद हम यहाँ move होंगे and there will be a Q&A with the audience. So you will get a chance to talk to Dr. Azra. और उसके बाद we'll proceed for chai. Thank you so much. And with these words, I would like to invite Dr. Azra Raza to the stage. Thank you. Thank you, Junaid. Chairman 𝗧𝗹𝗸𝗀, respected members of the NAPA board, gathered friends and guests. I will not be wrong if I say that we are really honored by the presence of President Arif Alvi, and expect our First Lady, Begum Sabina Alvi, to be arriving shortly. Although I haven't had the pleasure of meeting you before, but I've always felt a special bond with both of you. The President belongs to the medical profession, and Begum Sahiba is an ardent advocate promoting early detection of cancer, something very close to my heart. What would surprise many of my friends in America, but does not surprise me or you at all, is the simple fact that they have traveled all the way from another city to enjoy an afternoon devoted entirely to poetry. It's so beautiful. It doesn't surprise me in the least because, in fact, one of the most ravishing things about us as a nation is that we are a deeply poetic people. Whether a Pakistani is a highly learned individual or an unskilled laborer, one thing you can always count on is that when a ghazal is playing, they will say "Wah" at the right spot. We are all here because we are smitten by a tehzeeb which could not only produce this exalted fikr, but also an utterly seductive language in which to express this fikr. Let us begin then this program with a compliment to our beautiful, inimitable Urdu, using the magnificent words of 𝗔𝗍𝗍𝗀. नदी का मोड़, चश्मे शीरीं का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, यानी सितारा, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रख्ते नम, मोती की आग, गुल की महक, माहे नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, कितने हंसी उफुक से पैदा हुई है तू। लहजा मली है कि नमक ख्वार हूँ तेरा, सेहत जबान में है कि बीमार हूँ तेरा, आजाद शोर हूँ, आजाद शेर हूँ कि गिरफ्तार हूँ तेरा, और तेरे करम से शेरो सुखन का इमाम हूँ, शाहों पे खंदा जन हूँ कि तेरा गुलाम। This is the Urdu that has brought us all together for this afternoon. I feel deeply moved by just the fact that so many people have given me such deep affection and love through this shared
shared, I would say, obsession we have, the seduction of the language and the poetry that our poets have managed to put together. Thank you very much to all of you. Everyone knows I'm an oncologist and a cancer researcher, and I should have little to do with the performing arts. But when our dearly beloved, talented, gifted, young director of NAPA, 𝗔𝗍𝗍𝗍, invited me to speak, I accepted immediately, because just as the arts help us live richer and more fulfilling lives, the arts also help us in accepting pain and sorrow, teaching us how best to face even death with dignity. And in the arts, it is poetry, with the special power to put into a few words what others sense but cannot convey. Speak to many meanings, and if it is good, survives forever. The title I have given to this talk today is Sweet Poetry That Medicines All Pain. There is the physical pain of disease and illness, of course. And then there is the spiritual anguish of love and heartbreak. It is my intention to recite the words of some of my favorite poets to you, to show you how poetry can help us deal with illness, grief, loss, suffering. But most importantly, in the process, provide us with the necessary resilience and courage to face the slings and arrows of outrageous fortune. For example, at every stage of my life, I have found incredible solace in resorting to the genius of our great masters, who managed to distill observations and experiences acquired by the collective humanity over millennia, and then pack them with panache and brevity into the space of 2 lines. How gorgeous is that? Before I launch into Urdu, I thought I'll also introduce you today to an American poet that I have been obsessed with also for the last, few decades. Let me use a prime example, because one of my challenges as a practicing oncologist who sees 30 to 40 cancer patients every week, and I've been doing this for 35 years, one of my big challenges is to give patients harrowing, unwelcome news without deceiving or withholding the truth. How do you convey the bad news? The key is not just what you say, but in how you say it, of course. You have to do it with empathy, humanity, care, concern, and Emily Dickinson provides a guide about how to go through this. Tell all the truth. You see, the admonition in the first line is you have to tell the truth. You can't lie, you can't hold things back. Tell all the truth, but tell it slant, success in circuit lies. Too bright for our infirm delight, the truth's superb surprise. Like lightning to the children, eased with explanations kind, the truth must dazzle gradually, or every man be blind. Cancer takes its tolls. And again, one of the most poignant ways of expressing this anguish, and some of you may be surprised to know that I also continuously recite poetry to my patients, and not just Dickinson, but Ghalib and Mir also.
And they love it. They love the rhythm, the tonality. It's so gorgeous in our language that they just love the flavor of hearing that. And then, of course, I'm also one of those who insist upon explaining the meaning. So they get beaten into submission, but they really appreciate it. And I have taught most of the long-term patients that I'm following how to say "wah" properly. Here's an expression of the anguish of a cancer patient. But you see, poetry has this bizarre element that the same words can help the caregiver and the one receiving the care. I measure every grief I meet with analytic eyes. I measure every grief I meet with analytic eyes. I wonder if it weighs like mine or has an easier size. I wonder if they had it long, or did it just begin? I cannot find the date of mine, it's been so long a pain. I wonder if it hurts to live, and if they have to try, and whether could they choose between, they would not rather die. Andrew, my daughter Scheherazad's best friend, since they were little, received the diagnosis of a brutal, malevolent, malignant, advanced stage 4 brain tumor at 22 years of age, when he had just finished his senior year in Paris, where he had gone for one elective year, and come back to New York to now start his career in fashion and design. He gets diagnosed with this. Within 16 months, all options were out, and he was ready to die. Few days before he died, the nurses brought him a form. It's called the DNR form, do not resuscitate, which means if he has a cardiac arrest, they will not try to bring him back or put him in artificial ventilation. He sent them right back, packing away. What 22-year-old would want to sign that form? He said, go away. They went away. But that night, he called them back and said, now my father has come to spend the night with me. My mother has gone home. Bring the form back, and he signed it. He said, I couldn't do it in front of my mother. She wouldn't be able to take it. He passed away shortly. How can this father live through a day like this, where his only son, 22, has died in his arms? And what a beautiful boy Andrew was. This is an unknown poet. I have never been able to find the name, but I hear he's a young man living when he wrote it, he was young, living in Cleveland. चलो मैं जिंदगी भी काट लूंगा. मतलब जिंदगी काटना क्या बड़ी चीज है. चलो मैं जिंदगी भी काट लूंगा अगर ये आज का दिन कट गया तो. Power of 2 lines. चलो मैं जिंदगी भी काट लूंगा अगर ये आज का दिन कट गया तो. Ghalib serves as a master in this tragic situation. He wrote a unique marsiya in the form of a ghazal when he lost his adopted son 𝗧𝗹𝗸𝗀 Arif, who was his wife's nephew, died in the prime of his life at 35 years of age. The ghazal opens with a reproach in which the sorrow is almost infantile, like a child complaining. Ghalib is acting infantile. It expresses the raw irritability of grief in a way that I have never read in any language ever. Beauty of grief becomes more powerful because it is full of rage.
which in fact makes the impact of Ghalib's love more piercing than if he had indulged in lengthy descriptions of Arif's virtues. लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, बिकॉज वो सर पे घिस रहे हैं उसको, मिट जाएगा सर गर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूं दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और आए हो कल और आज ये कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कयामत को मिलेंगे, क्या खूब कयामत कभी होगा। हाँ ए फलक के पीर, that's such a gorgeous तरकीब, फलक के पीर, oh you old sky, हाँ ए फलक के पीर जमा था अभी आरिफ, you see फलक के पीर and जमा था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो न मरता कोई दिन और। This शेर, I would need Sayyida Arfa Zehra sitting here to explain. तुम माहे शबे चार दहम थे मेरे घर के, you were the 14वीं का चांद of my home. अब 14वीं का चांद जब घटना शुरू होता है तो आहिस्ता आहिस्ता पहले 13 का हुआ, 12, 11 इस तरह। गालिब ने इससे क्या फायदा उठाया देखिए, तुम माहे शबे चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन। It's just so deep, meaning suddenly there's darkness after you went. That's not possible because तुम तो मेरे घर के 14वीं का चांद थे। तुम कौन से ऐसे थे खरे दादो सतत के, दादो सतत लेन देन, कौन से तुम कौन से, this is what I'm talking about, the irritability of grief that comes here, the anger that he's expressing, तुम कौन से ऐसे थे खरे दादो सतत के, करते मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और, मुझसे तुम्हें नफरत सही नैयर से लड़ाई, अरे बच्चों का भी देखा ना तमाशा कोई दिन और नादां है जो कहते हैं कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन। John Donne laments the loss of even a single life because no man is an island entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. Any man's death diminishes me because I am involved in mankind and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. How beautiful. Now, let us move on to another gorgeous ghazal where the matla sets up a strange companionship between the poet and prophecy. Isa, the Christ, may have raised the dead, but would he be able to cure Ghalib's sorrow? A series of rhetorical questions follow here in which there are no answers. So let's just read this beautiful ghazal. Ibn Maryam hua kare koi, are mere dukh ki dawa kare koi. जिला करना जिला देना बहुत आसान है, इस दुख की दवा किस पैगंबरों के पास नहीं, ये कहना क्या बात कही है। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, शर्र आईन पर मदार सही, ऐसे कातिल का क्या करे कोई, चाल जैसे कड़ी कमान का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई, और बात पर वहाँ ज़बान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई। बक रहा हूँ जुनू में क्या क्या कुछ,
कुछ ना समझे खुदा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, किसकी हाजत रवा करे कोई। और क्या किया खिज़्र ने सिकंदर से, आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन जस्ट दिस शेर। क्या किया खिज़्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। और जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे। I'm hoping that Junaid will give me some time to talk about this shape. क्या किया खिज़्र ने सिकंदर से। So now I want to end, I think I've gone on too long, by showing you what our poets thought about the most profound suffering that humans experience, short of disease, of course. I mean love. And especially what you must be prepared to give up for the sake of love. First, of course, is Jigar. ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. And then, what is the courage you need? जुरत ना हो दिल में. Such a beautiful line. जुरत ना हो दिल में तो मोहब्बत नहीं मिलती. कमजोर दिलों के लोगों का काम मोहब्बत करना है. You'll be smitten by the second line. The mesmerizing is जान डाल देता है एकदम से. जुरत ना हो दिल में तो मोहब्बत नहीं मिलती. अरे खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती. This is so beautiful. खलीलुर रहमान आज़मी साहब. होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क. और अज़रा मुहिउद्दीन. होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क, या शर्त है कि अपने लहू से वुज़ू करो. आपने हमारे दिल की बात कही. हुमा मिर्जा के वालिद खलीलुर रहमान आज़मी, and हुमा, as you might know, रेख्ता के जो बानी हैं संजीव, उनकी बेगम हैं. So I have the highest, deepest respect for this couple. What they are doing for Urdu, उनके जैसा तो कोई नहीं कर सकता. होती नहीं है यूं ही अदा ये नमाज इश्क, या शर्त है कि अपने लहू से वुज़ू करो. So for the last, I'd like to end by reciting something by Nazir Akbarabadi describing the entire circle of falling hopelessly in love, how it changes all your perspective. Even a sehra starts to appear like a chaman if you imagine the beloved in it. You know, it just changes everything about you. And then, again, what this love demands of you. So this is the last thing I'll be reciting. This is Nazir Akbarabadi. वैसे तो उनका मशहूर आदमी नामा ज़्यादा है. So remember, this is that full circle now.
एक दिन बाग में जाकर चश्मे हैरत ज़दावाकर जामे सब्र खबाकर तायरे होश उड़ाकर शौक को राहनुमा कर मुर्गे नज़ारा उड़ाकर देखी रंगत जो चमन की ताजगी लाल नसरीन और समन की शक ऊंचे के दहन की ताजगी लाला के तन की का ताजगी गुल के बदन की किश्त सब्जे से हरी थी नहर भी लहर भरी थी डाली हर गुल की हरी थी हर ख़याबां पे तरी थी खुश नसीमें सहरी थी सर वो शमशाद सनोबर सुम्बुलो सौसनो अर नख मेवे से गए भर और नफसे बाद मोम्बर कहीं खुमरी की मुतब्बक कहीं अंगूर मौलक नाले बुलबुल के मुदक्कक कहीं गौगाई की बकबक इस कदर शाद हुआ दिल मिस गुंचे के गया खिल नाले इस कदर शाद हुआ दिल मिस गुंचे के गया खिल खुर्रमी हो गई हासिल रूद बालीदा वो आई शान कुदरत भी दिखाई बाग क्या था कि गोया अल्लाह ने इस बाग में जन्नत को उतारा नागहां सहने चमन में मजमए सर्व समन में जैसे हो रूह बदन में जैसे हो शमा लगन में जैसे खुर्शीद किरण में माँ हो परवीन परन में देखा एक दिल बरे राना तरहदार जफाकार दिल आजार नमूदार निगाह हमसरे शमशीर मिशा तरकश पुरतीर सरे जुल्फ गिरागीर दिरे खल्क की जंजीर जबी नूर की तस्वीर वो रुखे शम्स की तनवीर ज़बां शहद बियां शीर नजर रूह की अक्सीर वजब हुस्न दिलारा न कभी फहम ने देखा न कभी राह में आया जो तसव्वुर में समाया वो नजर मुझको जो आया मुझे उस अपना दिखाया दिल ने एक जोश उठाया जी ने सब होश उड़ाया सर को पाँवों पे झुकाया अश्क आंखों से बहाया उसने जब यूं मुझे पाया तो सुखन हंस के सुनाया कि तू है आशिक शैदा मगर आशिक नहीं पैदा हुए तुझ पे ये हवैदा कि अगर हमको तू चाहे जो मोहब्बत को निभाए न किसी गैर को चाहे न कभी गुल की तरफ देख न बुलबुल की तरफ देख न गुलिस्तान से पे नजर कर न दबिस्तान से गुजर कर छोड़ दे सबकी मोहब्बत हमसे रख दिल की मोहब्बत इसमें हम भी तुझे चाहे हैं यही चाह की राहें गरी मंजूर तुझे हो और ये मकबूल तुझे हो तो नज़ीर आज से तू चाहने वाला है हमारा Speechless. Wow. Was it not worth it? आपने हमें रुलाया भी और स्माइल्स भी आपने हमें दी हंसाया भी What a powerful talk. और आपने जब कहा कि मैंने अपने टाइम थोड़ा ऊपर कर लिया तो मैं सोचा था कि अभी तो शुरू किया था But we move to the Q&A, but before we formally start the question answer session, I just want to make an acknowledgement. हमने जब अभी ये प्रोग्राम का आगाज़ किया and I went up on stage to welcome the audience and invite our guest of honor. तो उस वक्त First Lady was not here in the hall, and I thought I'd welcome President Saab and First Lady when both are here. So thank you so much. Thank you so much. But I just want to say something else. Arif Alvi Saab and Begum Alvi Sahiba are no strangers to NAPA. They've been patronizing us, they've been supporting us, they know exactly what NAPA has been doing. Plays भी देखते रहे माजी में और आते रहे यहाँ पे. So in spite of all the security paraphernalia and everything that comes with the position, they are a familiar face to NAPA and we are so honored कि आप यहाँ आप लोग आए हैं आज. Dr. Azra, I wanted to ask you something.
as an oncologist, as a cancer specialist, and considering the fact that you've been dealing with terminally ill cancer patients day in and day out, seeing death every single day, how are you still so compassionate and so humane about it? And the fact you कहते हैं, आपने पहले भी कई मर्तबा अपनी talks में ये बात कही कि doctors should not emotionally attach with their patients. But in जिस situation में आपके patients होते हैं, they need that kind of reassurance coming in from the doctor, knowing fully well what the fate is going to be. How can you not be emotionally attached? How do you still maintain that compassion? क्या ये जो आपकी poetic sensibility है, does that have anything to do with it? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. Well, first of all, thank you and thanks to all of you for your patience. Nobody needs to prompt me to recite poetry because I'm always down to. I think it's the most beautiful thing. Somebody would ask me if I was to choose one beautiful thing in this world, I would say the puzzle immediately because it's just such a powerful thing. And when there are like-minded people, especially the First Lady, the President are here, they travel from another city, it has moved me no end to know that you are spending an afternoon devoted to poetry. Thank you so much. It's the encouragement the nation needs. Because when we see our leaders, we want to emulate you in many ways, but I would say that this is the most powerful way, that you can see such an endorsement of our tehzeeb, our culture, which rests upon this most significant genre that we have developed to the stars, in my opinion. Many of you might have seen the series Crown on TV, and something that struck me in that, Queen Elizabeth II was about 12 or 13 when her father died. When she was named the Crown Princess. Her father was alive, of course. And from that moment on, she was raised to be the queen. And one important thing was she could never show emotion. And so she became trained to be really this deadpan, never show even a single feeling, because that would make you a commoner. You had to be close to divinity, being royalty. And so this is how she began to rule when she became Queen Elizabeth II. But then there was some kind of an avalanche, and 63 school children died. Now the Queen knew that if she goes to visit that place, she'll break down, but she could never show her emotion, so she chose not to go. And of course that made the people even angrier. What a cold female, she couldn't even come when 63 kids have died and the entire city is in mourning, and here is our monarch sitting and partying away. What is she doing? So she finally did go, and she broke down. Who wouldn't? I told you the story of one boy, and I'm sure there were many eyes that were not dry in the audience. Imagine 63 children dying, so she broke down. And this is the conundrum, the paradox that we doctors face. We are trained not to get emotionally involved with patients because emotions cloud judgment. And you can't afford to do that because you have to make the best decisions for your patients. So the Queen also was not supposed to show emotion. She was trained not to, but what do you do in a situation like that? And I witnessed this too close to home because my mentor was my husband. And he constantly admonished me when I would become very involved with my patients that don't do that because you won't be able to make the right decisions for them. But then he got diagnosed with cancer. And the very type that he had dedicated his life to cure, leukemia,
You know, the first thing this man did was turn to me and say, "As you are going to take care of me." I said, "Are you crazy? You spent your whole life teaching me not to treat someone if I'm emotionally involved." His answer was, "Sorry, but I can only trust your judgment." So I had to take care of him. The point I'm making is, thank God I never listened to that man before. But I got emotionally involved with every patient. And it helped me take care of him also. And so, for me, you see, I feel that the East is, in a way, very different because we don't have this stark separation of Athens and Jerusalem. Reason and passion. We don't. We move in and out, and we have, in fact, our reason is supported by emotion, and our emotions also make us reasonable, I think. So I feel that we have a far more natural relationship that bridges the gap. And our poets prove it over and over. जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न करता। मुझसे ये रोज़े हश्र कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। यानी, but there is constant interaction. So the question here is, should you be involved with your patients? This is what Junaid is asking me. And if you are involved, can you make the right decisions? And how has poetry helped me? I would say that every sulcus and gyrus in my brain, every fiber in my body is steeped in poetry, because I have never met a problem in my life that I did not find some solution or some reasonable discussion of in our poetry. And it really helps me. And the more sorrowful or anguishing the situation, the more you can turn to poetry and gain strength from that. So poetry has played a very fundamental, primal role in my upbringing, as well as in the way I deal with everyday situations, big or small. Thank you so much, Dr. Thank you. And I don't want to be the one asking questions because I know audience is waiting very impatiently to talk to you also. Do we have a mic here for the audience? Okay, so I'd like first to please take the mic to the First Lady if she wants to say anything or ask any question. जी अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि मैंने आपका आके सुना। And I'm reading your book also. And I forgot to bring कि मैं आपसे लिखवा लेती यहाँ। What a good experience आपने जो शेयर किया, बहुत शुक्रिया आपका आने का। I'm trying कि कुछ help करूँ, but माशाल्लाह what you are doing is great. Thank you. अगर आप इजाज़त दें तो जी मैं नेक्स्ट आपकी तरफ ही आ रहा हूँ। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। और ख़ास तौर पर इस वजह से परेशान हूँ कि मैं समझता था कि इंसानियत जब खुद चीज़ें देखती है तो उसका दिल नरम होता है। I am flabbergasted by what is happening in Gaza. इतना तकलीफ थे, यानी जो मैंने वो क्लिप्स देखना छोड़ दिया, क्योंकि हर क्लिप पर रोना आएगा। क्या दुनिया को असर नहीं होता इस चीज़ का? It's something which is different from what your poetry talks about and everything. But I am totally disappointed in humanity because I thought ये emotions हैं, ये दर्द है इंसान का जो इंसान को इंसान बनाता है। Thank you. Thank you, sir. So please raise your hand अगर किसी को कोई बात करनी, सवाल करना है. There's somebody over here. Mic यहाँ पे दीजिए. Right here, बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम अज़रा। मैं आपकी पोइट्री और सब बहुत देखती हूँ एंड मैं अभी जो हूँ ना
آپ کی جو بیٹا وہ بچہ تھا اس کے بارے میں جب سنا کہ اس کو ول لکھنے کو کہا اس کے ڈاکٹر نے نرس نے, تو میری سسٹر وہاں پر لندن میں بھی اس کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ لاسٹ اسٹیج ہے لنگس کینسر, اینڈ نرس نے اس کو لا کر کے دیا کہ اس کو اپنے نیکسٹ کی اور سپورٹ لکھ دے. And she's so strong and she's fighting it. She's fighting it. اور وہ بچوں کو آرٹ تھراپی کراتی ہے اور اپنے لیے بھی. And she's saying I'm going to die with strong. اور میں اور ایک بات اور کہنا چاہ رہی ہوں مسز الوی کے بارے میں کہ وہ جو ہے نا بریسٹ کینسر کے بارے میں جو اویئرنیس کروا رہی ہے نا, دیٹ از گریٹ, دیٹ از ویری گریٹ. بہت بہت عظیم کام کر رہی ہیں. اینڈ وی آر ڈوئنگ آلسو اٹ, وی آر آلسو ویری, سب کو میں ہم لوگ دیتے ہیں. مگر میری اپنی بہن کا جو ہے نا قصہ وہ یوٹیوب پہ بھی ہے, اس کا سارا کیس کیا ہے. اینڈ شی از ویری اسٹرانگ, بہت اسٹرانگ. اور آپ کی جو پوئٹری ہے وہ اس کو اور دے گی جب میں اس کو بتاؤں گی. تھینک یو. واجد یہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ بیٹھی ہیں, ان کو بھی آپ مائک دیجیے. ویڈ لائک ٹو ہیئر عارفہ آپ سے. میری آواز دبانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت خوشی ہوئی, اور آپ کا جو ایک شعر کا احساس ہے, میں شعور نہیں کہہ رہی, احساس شعور سے کہیں اوپر ہوتا ہے. شعور تو نفع و نقصان دیکھ کے آدمی حاصل کرتا ہے, احساس میں نفع و نقصان مٹ جاتا ہے. یہ صرف پیوست ہوتا ہے. اور آپ نے کیا اچھی غزل غالب کی سنی کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. گستاخی کی اجازت چاہ کے کہتی ہوں کہ میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں کہ غالب تانا دے رہے ہیں پروردگار کو, تانا دے رہے ہیں پروردگار کو کہ کیا پیغمبر بھیجا ہے جو موت کا علاج کرتا ہے. مجھے تو وہ چاہیے جو زندگی کا علاج کرتا. What a treat. Thank you. Why don't you come to Pakistan more often? تم یہاں تنویر کعبہ سے جبیں روشن رکھو. تم یہاں تنویر کعبہ سے جبیں روشن رکھو, ہم وہاں پر ہیں بتوں کی پاسبانی. Adab, it's not like here you are every day and it's an honor to have you here. I've been following you for the past 3 years and since you are here to ek 𝗥𝘇𝗿 آپ شاید آپ نے پہچانا نہیں ابھی بہرے. It was one of the parts, but like وہ جو آپ نے ایک کہیں جس طرح سے ڈیسائیڈ کی تھی کہ آخر میں اس کا one of the front part. Thank you so much. واجد جاوید جبار صاحب کو شاید کچھ. نہیں, میں تو بے زبان ہوں اور اب چاہتا ہوں کہ میں سنتا رہوں, کچھ نہ بولوں, سنتا رہوں. سنائیے. Well, it's a good time for me to do that share then, کیونکہ عارفہ نے بھی ابھی اسی کی طرف اشارہ کیا. ابن مریم ہوا کرے کوئی, میرے دکھ کی دوا کرے کوئی, کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند, کس کی حاجت روا کرے کوئی. ہوا یہ کہ when I was 28 years old and I was doing my fellowship, I became a little anxious that I'm not schooling myself properly in Urdu, and I decided that the only way to really understand Urdu poetry is understand Ghalib. Once you can understand Ghalib, you can understand all the istaaras and tashbeehs and everything.
So I started something called Urdu Mehfil, which meant me, my friend Seema Khan, and my older sister Bibi, to begin with in Buffalo. Once a week we would sit together, open 11 sharas of Ghalib, and started reading the Diwan from the beginning. एक शेर फिर उस पे 11 शरें देखी जाती थी क्या क्या मतलब है. For the next 20 years, regularly, I read that Diwan cover to cover twice. And the tragedy to me was, worse still, there were many shares for which I had a completely different idea than the 11 sharas I was reading. And of course, the act of interpretation is so individual. It's literally an invitation into reading and rereading the same thing over and over. And so I was very anxious to somehow express myself, but I needed a partner. And then, of course, fortunately, I met 𝗧𝗹𝗸𝗀, who, अभी जितने लोग इस कमरे में हैं, excluding the president and first lady, हम सब B team हैं. A team में बहुत कम लोग होते हैं. Beethoven है, Einstein, idealism, बाकी हम सब B team हैं. Sara was A team. उनकी जैसी अकल. In fact, I gave the Yosin lecture at Habib, and I dedicated it to my friend Sara, because I met her and I instantly knew that this is the kind of intellect with the Western sensibility that I need to bring. तो उसकी एग्जाम्पल एक हम आपको देना चाह रहे हैं. Then of course we did our book on Ghalib, Epistemologies of Elegance. ये जो गज़ल है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इसका ये शेर है एक आगे चल के कि क्या किया ख़िज़्र ने सिकंदर से. ख़िज़्र ने सिकंदर से क्या किया? The apocryphal story is that Hazrat ख़िज़्र, who was a पैगंबर, was looking for the elixir of immortality. And so he set out on this journey to find the plant that would make him immortal. On the way, he meets Alexander the Great, and some people say Cyrus the Great. Anyway, he meets him, and Alexander joins him in this quest. As they are going, there's some kind of a storm and horrible weather, and they get separated. And now ख़िज़्र finds that plant, imbibes it, and becomes immortal. तो अब हज़रत ख़िज़्र तो यूनिवर्सल गाइड हैं. अगर हम रास्ता खो जाएं जंगल में तो उन्हीं को याद करते हैं कि वो आके रास्ता दिखाएं. और वो इज़ कंसिडर्ड अलाइव. वो खुद तो इमॉर्टल हो गए, मगर बेचारे सिकंदर के साथ क्या हुआ? वो 32 साल की उम्र में ख़त्म हो गया. तो अब गालिब ने क्या तंज किया है इस पे. आप सुन रही हैं? क्या किया ख़िज़्र ने सिकंदर से? यही किया. But the next line, क्या किया ख़िज़्र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे. अगर एक पैगंबर ये कर सकते हैं तो हम किस पे डिपेंड करें. तो जितनी शरें आप देखें उसमें इसका मतलब ये लिया है लोगों ने कि इसका मतलब है आप किसी पे रिलाय नहीं कर सकते, सिर्फ अपने पे करिए. सेल्फ रिलायंस इज द आंसर. And Sara and I felt completely the opposite, and this is the reason why we even bothered to spend so much time reinterpreting Ghalib. Because you see, for me, it is the exact opposite meaning, the exact opposite. That Ghalib is actually admonishing us. Just like Theodor Adorno, the famous philosopher, he says that the highest form of morality is to be a little uncomfortable in your own home. Ghalib is also saying, when you become self-satisfied and complacent that I am my own best guide, just remind yourself, kya kiya ख़िज़्र ने सिकंदर से. It's an attack on self-reliability. No, you are not smart enough to know what to do. You must seek guidance. You must remain skeptical. Remind yourself every day, क्या किया ख़िज़्र ने सिकंदर से. Amazing. Wow. One thing more that I wanted to mention, and I think उसका कुछ इतना जिक्र नहीं हो सका. Dr. Azra Raza, as an oncologist, has been an advocate of prevention
rather than cure of the disease. और इन्होंने जो किताब लिखी, The First Cell, the whole concept is, जो Dr. Azra Raza की thesis है कि detect that first cell in the body that triggers the disease, और वहाँ उसको उस सेल को किल करो. तो जो ये इनकी एडवोकेसी है कि जो research dollars are spent on finding the cure, which we've not been able to, and for the past 50-60 years वही treatment हो रही है और वही दवाइयाँ हो रही हैं, you know, money is going waste, so to speak. तो अगर उसको divert किया जाए prevention के ऊपर and finding that first cell and killing that first cell that triggers the disease, तो शायद हम उसमें कुछ ज़्यादा advancement कर पाएं. And this is something which you have been taught. थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए. And just to let you know, that book was published in Pakistan by Lightstone Publishers of Amina Sayyed Sahiba. She's also here in the audience, and कुछ copies उसकी आपको बाहर भी मिल जाएंगी if you want to buy. So tell us a little about कि ये इस तरफ आप जो आई कि prevention rather than cure in the first cell. So कुछ उसका भी आप बताइए. एक कॉपी तो समीना के लिए रिजर्व करवा लीजिए. जी. I want to autograph, but unfortunately I forgot it. नहीं, ये बाहर से मांगा. I think we can donate a copy. Of course, it's called The First Cell, but it's treated like it's the satanic verses, because everyone is kind of made very uncomfortable by my insistence that you are not being fair to patients, because by chasing and trying to kill every last cancer cell, what we are doing is the same primitive caveman kind of treatment of slash, poison and burn. And if only we can find and eliminate it at inception, obviously we would be able to prevent the end stage monstrosity with all of its malevolent, horrible effects. And that's what I've been advocating. But then when I present to people, we know that, of course we know, yes, nahi kya baat hai isme. Well, if you know, how come you're not doing it? How come you are constantly chasing down the first cell? People ask me, how has it happened that billions of dollars of industry has emerged in America around this whole concept, when, to be fair to patients, it should be early detection. And I often give this example because, I don't know, it's an evening of poetry, so this example kind of is brutal, but if you take a frog and you throw it into boiling water, it's going to jump out. But if you take a frog, put it in cold water and slowly start heating it, it will die but not jump out. Because that desensitization that happens slowly. You keep getting used to things. So you do one little corruption, you don't get caught, you do the next one and the next one and the next one, and then you just lose sight of where you have come, where you started. So what's happened over the years, I'd like to just explain this for two seconds, because I think it's so important. It seems completely counterintuitive to be following and chasing the last cell. But what's happened is, who has stake in the game? There are the new researchers entering the field. If you are going to do something against the grain, and the grain is to follow the last cell trail, if you're going to take a risk and do something like that, there is a chance of failure. And failure is something that young people who are starting their career cannot afford. The second group is the older people who are well established now. मगर उनकी बारीकी ये है कि अगर वो 30 साल से चूहों पे काम कर रहे हैं, तो अब वो क्यों बदलें? कैसे बदलें? उन्हें आता ही नहीं कुछ और करना. So the older people are too set in their way, the younger people cannot take the risk. And so, thanks to Ghalib and me, I'm the one who took on everything. And as I launched my book, The First Cell, 𝗧𝗹𝗸𝗀, the Pulitzer Prize winning marvelous author of the biography of cancer,
emperor of all maladies, was my interlocutor at the Asia Society in New York. And as soon as we sat down, of course, we also shared a lab together, we were best friends. He calls me a cross between his editor and his mother, because I'm the only one who can scold him. So, as we sat, the first question he asked me, so Azra, you are saying that the emperor has no clothes? Oh, yes, that's exactly what I'm saying. That it's all smoke and mirrors. So, it is so logical, so obvious, but it needed a foreigner like me, an immigrant, who is not a hostage to the traditions in which those scientists are raised, because they have been trained on mice, trained to try and develop models of models of cancer. So when they see a human cancer, immediately they want to take the cancer, take a mouse, kill the mouse's immune system, put this human cancer there, let it grow, treat it with drugs, and say, oh, it disappeared. Let's bring this drug to the bedside. Well, it's an extremely artificial system. A model, by definition, is artificial. It's a model, it's not the real thing. You know that famous surrealist artist, René Magritte, I gave this example at the USIN lecture, has a painting of a perfect painting of a pipe, and the title of the painting is, "This is not a pipe." Why? Simple reason, you can't pick it up and smoke it. It looks like a pipe, yes, it's not a pipe. And so a model is a model, it's not the real cancer. And all of these things make people very uncomfortable, because that means it makes their work irrelevant. And no one wants to accept that. Not that I'm very relevant. I mean, I'm not, this is too much I, me, mine. That's not the point. The point I wanted to make is simply that as an outsider coming into the field, the first thing I did when I decided to study this particular kind of leukemia and pre-leukemia, I said, no, acute leukemia is too deadly a disease. If I want early detection, I should study people who are at high risk of cancer and then follow them till they develop the first cell. So pre-leukemia syndromes in which patients do develop acute leukemia, first thing I said was, oh, if I'm going to study this, I should save samples. So every bone marrow I did, every blood I drew from my patients, I started putting them in my freezers. And today I have the largest collection of human bone marrow blood samples, 60,000 in the country, in the world. That means collected by a single oncologist. Not one cell comes from another body. And this is such a precious national treasure. So the problem people have with me is that I see 30 to 40 cancer patients a week. I have a very busy cancer research lab. I have the world's largest tissue repository, and I am a cancer widow. What angle on cancer are they going to discuss with me and pose me on? I would love to invite them to debate with me. वो फरमाइश कर दी उन्होंने कि आप अपना मिस्टर तरीक फिर से फिनाले में पढ़ लीजिएगा. किसी ने मेंबर ऑफ ऑडियंस, वेरी गुड फ्रेंड, सेड कि वो तो अंग्रेजी भी बहुत और उर्दू भी पढ़ती हैं. उन्होंने अपना टाइटल जो लिखा है, स्वीट पोइट्री दैट मेडिसिन्स ऑल पेन, तो ये इन्होंने कंकॉक्ट किया है, मेडिसिन इनटू वर्ब. So that is yours, and I'm asking a pedantic question कि आप इतनी शायरी में स्टीप्ड हैं, तो आपने खुद भी अशार कहे हैं या मैंने आपका जो पढ़ा है शायद मेरे नज़र से ओझल है, तो ये मैं पूछ रही थी. और सबको फिर से मैं कहूँगी, फर्स्ट सेल पढ़िए, सिर्फ अज़रा को यूट्यूब पे नहीं देखिए, वो किताब पढ़िए. That is just the big masterpiece that I think in my literature career I read now. And you read done, that was my thesis, so I love that part also. Thank you. Thank you. और आपसे थोड़ा सा और निजी तौर पे मिलना है, पता नहीं मिल जाऊंगा Inshallah. On one of my husband's birthdays, this is what I read to him. I may have many faults, but you have only two. Everything you say and everything you do. This is a Dorothy Parker, it's not
Well, talking about and I'm trying to use the little time that we have over here, when we talk about the various facets of your personality, of your life, your career, so जहाँ एक तरफ Columbia University, MDS Center, cancer research, वो सारी चीज़ें हैं, your profession, and of course the poetry, Ghalib, and the book that you've written, you and Sarah Suneri have written, co-authored, reinterpretation of Ghalib. But एक और जो आपकी शख्सियत का पहलू है, the facet of your personality, is your grip over the marsiyas of Mir Anis and Mirza Ghalib. और जो आपकी तहजीब है, जो आपकी अपब्रिंगिंग है, उसमें जो हिस्सा उसका था बचपन से, and if I'm not wrong, आपको शायद pages and pages and pages of marsiya ज़बानी याद हैं, जो शायद लोगों को एक लाइन भी याद नहीं होती हो कि आपको पूरी उसकी शायद दीवान याद है ज़बानी. तो अगर थोड़ा सा कुछ वहाँ से भी आप जो शायरी सुना रही हैं, तो कुछ अशार अगर सुनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम टू डू दैट. हालांकि हम पाकिस्तान आए थे तैया करके, one of my gay best friends who was also a great Urdu poet, Naseem, वो उनसे क्या कहते थे, हटो हटो तुम होशियार, इश्क में भी करते हो तकैया. मीर अनीस का क्या बात. कैफी आजमी साहब का कहना है कि ये जो उर्दू हम और आप आजकल बोल रहे हैं, ये सिर्फ मीर अनीस की वजह से हम तक पहुंची है. बच्चों को सिखाना उर्दू फॉर एग्जांपल, बहुत हम माँ बाप बहुत एंशियस होते हैं कि बच्चों को थोड़ी बहुत सिखाई जाए उर्दू. अब उसमें मुश्किल ही हो जाती है. हमारी बच्ची आधी अमेरिकन आधी पाकिस्तानी वहाँ पली बढ़ी, हालांकि 2.5 साल की उम्र से हमने उनको गालिब रटाना शुरू कर दिया था. जब वो 5 साल की उम्र में यहाँ आई तो बहुत प्राउडली कहती हैं, I know 62 Ghalibs. पहला शेर जो उनको याद करवाया वो ये था, क्योंकि हमारी अम्मा ने कहा कि जब तक इस उम्र में इनका शीन काफ दुरुस्त ना कराओ तो वो घोड़ा कहेगी, घोड़ा नहीं कह सकती. असद हम वो जुनू जौला गदाए बेसरोपा हैं कि है सरपंजे मिशगान आहू पुष्पार. ये आपने 5 साल बच्चे को 2.5 साल की बच्ची को, वाह. 5 साल की तो बुरी औरत हो, क्योंकि शीन काफ इस वक्त से दुरुस्त कराना शुरू किया. तो लेकिन मुश्किल ये है कि अगर आप उनके सामने ये शेर पढ़ दें तो वो उसका लिटरल मतलब लेंगे. फॉर एग्जांपल मीर अनीस कहते हैं, सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को, सदा है फिक्र तरक्की बुलंद बीनों को, अरे हम आसमान से लाए हैं इन जमीनों को. अब वो जमीन का मतलब आप समझेंगे, लेकिन गजल की जमीन, अब आपको पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कितना फर्क है इसमें, वो नहीं समझ पाएंगे. दिस इज व्हाई आई अर्ज एवरीबॉडी कि आप पढ़िए, उर्दू को पढ़ के तो देखिए जरा क्या क्या कमालात हैं. अब आपने मीर अनीस का कहा है, हाँ, जब पता की मुसाफत शबाब क्या बात, उसकी चंदन सुना दें, गर्मी का जिक्र सुना दें. ये आप देखिए, एक रोज की गर्मी का जिक्र है. ये उर्दू जबान अपने कमाल पे पहुंची हुई है इन चंद लाइन्स में. गर्मी का रोज जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिस्ल शमा न जलने लगे ज़बां, वो लू वो अलहज़र वो हरारत के अल्फमा, रंग की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खुलक को खल्क तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर. वो लू वो आफताब की हिद्दत, वो ताब वो तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खेमे जो थे हुबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक
خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا، آگے رواں سے منہ نہ اٹھاتے تھے جانور، جنگل میں چھپتے پھرتے تھے طاہر ادھر ادھر، خسخانۂ مژاں سے نکلتی نہ تھی نظر، مردم تھے ساتھ بند پردوں کے اندر عرق میں تر، اور گر چشم سے نکل کے ٹھہر جائے راہ میں، ارے پڑ جائے لاکھ آبلے پائے نگاہ میں، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے 𝗧𝗹𝗸𝗀 سے، دیکھ رہے ہیں، شیر اٹھتے تھے نہ دھوپ کے مارے کچھار سے، آہو نہ منہ نکالتے تھے 𝗧𝗹𝗸𝗀 سے، آئینہ مہر کا تھا مقدر غبار سے، گردوں کو تپ چڑھی تھی زمیں کے بخار سے، گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا قیام۔ Let me give one background here. Samandar here is not the sea. Samandar is that mythic animal salamander which lives in fire. اب غالب کی غزل ہے وہ بہت مشہور، اس کا یہ مقطع ہے کہ جاری ہے اسد داغ جگر سے میری تحصیل، اپنے جگر کے داغ کی جلن سے میں زندہ ہوں، جاری ہے جگر داغ جاری ہے اثر داغ جگر سے میری تحصیل۔ اب اس میں جو باریکی ہے سمندر کا لفظ جاری ہے اثر داغ جگر سے میری تحصیل، آتش کدہ جاگیر سمندر نہ ہوا تھا، یعنی ابھی the salamander had not yet learned to live in fire. Even before that my داغ جگر has been sustaining. یہ غالب نے لفظ استعمال کیا ہے یہاں سمندر as salamander۔ اب انیس لائیں اس کو آپ دیکھیے، گرمی کا بیان جو وہ کر رہے ہیں، عذرا کو بھی یہ زبانی یاد ہوگا مرثیہ، گرمی کا بیان بھی سنیے عذرا، جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے، جہاں مچھلیاں رہتی تھیں پہلے، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا قیام۔ اتنی گرمی ہو گئی تھی، اتنی آتی کہ that animal that lives in fire is now living in that spot۔ جھیلوں سے چار پائے نہ اٹھتے تھے تاب شام، مسکن میں مچھلیوں کے سمندر کا تھا قیام، آہو جو کاہلے تھے تو چیتے سیاہ فام، ہر موج کے نکل آئے تھے، پتھر پگھل کے ہو گئے تھے مثل موم خام، سرخی اڑی تھی پھولوں سے سبزی گیاہ سے، پانی کنویں میں اترا تھا سائے کی چاہ سے، گرداب پر تھا شعلہ جوالا کا گماں، انگارے تھے حباب تو پانی شرر فشاں، منہ سے نکل پڑی تھی ہر ایک موج کی زباں، تہ پر تھے سب نہنگ مگر تھی لبوں پہ چاہ، پانی تھا آگ گرمی روزے حساب تھی، ارے ماہی جو سیخے موج پہ آئی کباب تھی۔ اس دھوپ میں، اب یہ امام کی بے کسی، اس دھوپ میں کھڑے تھے اکیلے شہ زمن، نہ دامن رسول ہے نہ سایہ علم، شعلے جگر کے آہ سے کے اٹھتے ہیں دم بدم، اودے ہیں لب زبان پہ کانٹے کمر میں خم، بے آب تیسرا جو دن ہے مہمان کو، ہوتی ہے بات بات پہ لکنت زبان۔ انیس کا کمال، ایک گرمی کا بیان 7 بندوں میں، اس سے کوئی بہتر کر سکتا ہے؟ I think one more question and then we'll have to. Thank you. اچھا اوکے ڈاکٹر خاور wants to. آپ کچھ پوچھیے پھر ڈاکٹر خاور کے پاس جی۔ تھینک یو آپا، میں ایکچولی آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا، لیڈی لبرٹی کے دیش سے آپ مطلب آئی ہیں، تمام لبرٹیز وہاں پر ہیں
हैं और ये सब कुछ जो आपने अचीव किया, ये हम एक इस तरह के मुल्क में हैं या इस तरह की शायरी हमारे यहाँ मतलब होती है जो हमारी लिबर्टीज़ को कर्टेन करने में बड़ा उनका रोल है। लिपटते झपटना झपट लपटना, ये जो स्वीट पोइट्री है ये आप कैसे डिस्टिंग्विश करती हैं? ये जो हमारी लिबर्टीज़ भी इंश्योर रहे जिसमें बहुत कुछ है वो हमारा। दूसरा मेरा आपसे सवाल इम्प्रेसिज्म के हवाले से, आप क्योंकि इतनी बड़ी सैंपल 60,000 सैंपल, क्या रीज़न है कि क्या हमने शायद अकल को इतना पीछे किया तो साइंस डेवलप ना कर सके, या क्या रीज़न है कि ये जो पेशेंट है जिसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही हमारा जो स्ट्रेस था मतलब मशरिक का इम्प्रेसिज्म न ला सका, क्या रीज़न है? तहजीब के ऊपर सवाल। सवाल तो बहुत अच्छे हैं मगर ये सवाल आप प्रेसिडेंट साहब से करें। This is from the physicians of USA. I used to be a physician scientist there. This lady was a 𝗧𝗹𝗸𝗀 to all the physicians from Pakistan. This is the period when there was no doctor, foreign doctors are not known to help other doctors, you know. She was always there, accessible with wise counsel and good advice. So, shukriya aapka bahut bahut. Thank you. Thank you. Maybe you can decide something like that. Well, we are sitting in Karachi. So, one of the young men from Karachi came in. अब आपने कहा लैब का जिक्र किया ख़ाबर, तो उसके हवाले से बेगम साहब बैठी हैं और सिंध में हम लोग इस वक्त कराची में बैठे हैं। तो ये बच्चा आया हमारी लैब में काम करने, उस वक्त तो बच्चा था 25-30 साल पहले। Now he's a big shot gastroenterologist in Sacramento, California, सैयद यासीन आतिर। उसने एक बहुत ही प्यारी चीज़ लिखी है। उसका एक लफ्ज़ है which I find completely ravishing, क्योंकि इस लफ्ज़ के इतने मतलब हो सकते हैं, और वो लफ्ज़ है साइन। तुमसे अगर ना मिलता साइन, कैसे वक्त गुजरता साइन। तुमसे अगर ना मिलता साइन, कैसे वक्त गुजरता साइन। मैं हूँ एक मुसाफिर गोया, तुम हो मेरा रास्ता साइन। सागर से अगर प्यार ना होता, दरिया उल्टा बहता साइन। तुमसे अब क्या राज छुपाएं, मेरा राज तुम्हारा साईं। कागज पर दो चार लकीरें, कागज पर दो चार लकीरें, और न कुछ भी लिखा साईं। हम और तुम एक साथ अकेले, हम और तुम एक साथ अकेले, कमरा ज़ब्त से महका साईं। हम और तुम एक साथ अकेले, कमरा ज़ब्त से महका साईं। मेरी बातें कान तुम्हारे, बड़ी प्रोफाउंड लाइन है। मेरी बातें कान तुम्हारे, बीच में एक सन्नाटा साईं। मेरी बातें कान तुम्हारे, बीच में एक सन्नाटा साईं। एंड अ कॉम्प्लीमेंट टू Sabina for all her amazing work for cancer patients. मैंने पहरों सोचा साईं, कोई तुमसे अच्छा साईं। मैंने पहरों सोचा साईं, कोई तुमसे अच्छा साईं। तुमको क्या बतलानी साईं, कोई ना तुमसे अच्छा साईं। Thank you so much. मेरा ख्याल है वक्त हो चला है। I know कि divided families here with children or siblings in the US and between Pakistan. आपने एक शेर पढ़ा था, एक क्लिप मैंने सुना था कि तुम्हारी दावत कबूल है मुझको, बस एक बात का ख्याल रखना, बियर किसी ब्रांड की हो, चिकन फ्राई हलाल रखना। So what I meant to say was there should be a collection of similar
ironic things that we can send to our children, our siblings, کہ دیکھو بیٹا یہ ڈائیکانڈمی ہے اور یہ آئرنی ہے جس میں آپ لوگ وہاں رہ رہے ہیں. I would recommend Ghalib over this shit. بہت مشکل ہے میری. اجازت ہے آپ کی ذرا سا پارٹ سنا دیں بیکاز بحر طویل ایک تو سنا چکے ہیں نذیر اکبر آبادی کی, but I think people want to hear the ڈاکٹر عارفہ بھی یہاں بیٹھی ہیں, آپ بھی ہیں, اور آپ نے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا. آپ نے اردو کے لیے کے بہت اچھے شعر پڑھے, اور ہمارے جو اساتذہ کہوں گے غالب ہیں, میر ہیں, ایون فیض احمد فیض, اور ان سب کے بارے میں آپ نے کہا. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اردو کہیں گم ہو گئی, اس لینگویج جو اردو ہے کہیں غائب ہو گئی ہے, کیونکہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے ایک اور زبان کا سہارا لیا جو پاکستان میں میرے خیال میں ایلیٹ کی زبان ہو گئی, اور میرے خیال میں 70% ہم نے اردو کی تعریف اس کے اندر کی ہے, جبکہ گلزار صاحب بھی کہتے ہیں ایسی لینگویج دنیا میں نہیں ہے. اور یہ آپ جہاں بھی یہ دیکھتے ہیں میرے خیال میں آپ کو ینگسٹرز بہت کم نظر آئیں گے. اور میں نے آج جو پروفیشنل, میں نے یہ دیکھا ہے کہ لٹریچر نے آپ کے پروفیشن میں کتنا بڑا ایک پلس پوائنٹ دیا ہے. ہمارے یہاں بالکل لٹریچر ختم کر دیا گیا ہے اس چکر میں کہ یہ کیمبرج پڑھائیں گے, ابھی آئی بی سسٹم آ گیا, میٹرک سسٹم کو ہم نے اپڈیٹ نہیں کیا, بالکل اس کو ختم کر چکے ہیں ہم لوگ. تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ عارف صاحب بھی بیٹھے ہیں, جب بھی باہر جائیں گے تو یہ کبھی بھی اپنی زبان کے وہ نہیں کریں گے. تھینک یو, بٹ وی ہیو اے پاسٹی آف ٹائم. ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کنسٹرینٹ ہے, مجھے علم ہے کہ آپ لوگ بہت باتیں کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بس اس میں تو پورا دن پوری رات گزر جائے گی. سو آئی تھنک ہم اختتام کریں گے وہ جو بحر طویل کا ایک آپ مصرع سنانے. دیکھیے, جب سے بحر طویل کا ذکر شروع ہوا مستقل ہم ایک بات کہے جا رہے ہیں, وہ یہ کہ بحر طویل سنانے سے پہلے ایک موڈ بنانا پڑتا ہے. اب اس سوال کے بعد آپ بحر طویل ڈانٹ کے سنا سکتے ہیں. ہمیں تو پڑھ چکی ہے ڈانٹ انگریزی بولنے. تھا اسی گلشن شاداب میں بھی کہ پڑی اس پہ نظر, ٹھہر گیا بیٹھ گیا تھام کے زانوں, بس ادھر دیکھ ادھر دیکھ. میں نے یہ سوچا کہ فسون اس پہ محبت کا ہوا ہے کہ خود ہی جاگ اٹھی میرے, تڑپ اٹھی وہ نفرت کی جو پہلے کی محبت ہے. میری چاہ نے چاہا کہ دکھاؤں اسے دل کس طرح جلا کرتے ہیں, اور زمانے کو بھی بتلاؤں کہ لوگوں یہ کہا سچ ہے کہ آتا ہے کیا اپنے ہی آگے. انہیں دیکھو یہ کبھی ہم کو ستاتے تھے, جلاتے تھے, رلاتے تھے, پڑھاتے تھے, نہ آتے تھے نہ جاتے تھے, مہینوں سے فتح شمع جلاتے تھے, کبھی آنکھ چراتے تھے, کبھی منہ کو چھپاتے تھے. اب ایسا ہے کہ میں ان کو ستاتا ہوں, جلاتا ہوں, چڑھاتا ہوں, پڑھاتا ہوں, نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں, مہینوں سے فتح شمع جلاتا ہوں, کبھی آنکھ چراتا ہوں, کبھی منہ کو چھپاتا ہوں. عجب الٹا تماشا ہے, انہیں ہو گئی الفت مجھے نفرت, انہیں حسرت مجھے حیرت. مجھے آتی ہے ہنسی اور انہیں رونا, وہ میرے عشق پہ روتے ہیں میں ہنستا ہوں. وہ وفاؤں کے طلبگار میں اس لفظ سے بیزار, انہیں چاہ کا ارمان مجھے ظلم کی خواہش. انہیں اس طرح ستاؤں مجھے جس طرح ستایا, انہیں اس طرح پڑھاؤں مجھے جس طرح پڑھایا. جو کروں آنے کا وعدہ تو مہینوں نہ ہو پورا, جو ہو پورا بھی ہو کیسے ملوں ان کو ستاؤں, پلک کو رنج بڑھاؤں. وہ جو کچھ کہنے کو ہوئے تو کہوں رہنے دو, فرصت نہیں سننے کی, سنوں بھی تو بس اس کان سے اس کان اڑا دوں. وہ کہے بہر خدا رحم کرو ہم سے مصیبت نہیں اٹھتی, کرو وہ یاد وہ گھڑیاں جب میرے عشق میں تم رہتے تھے گریاں. یہ ستم کیا ہے کہ محبوب سے رہتے ہو کشیدہ و کبیدہ, نہ محبت کی فکر ہے نہ عنایت کی نظر ہے. جو ادھر حال تھا پہلے وہی اب حال ادھر ہے, وہی اب سینہ سپر ہے. جو بنا پھرتا تھا قاتل, جو کیا کرتا تھا بمزے, ارے الٹا تماشا ہے کہ پہلے جنہیں تھی
उल्फत, उन्हें हैरत मुझे आती थी, उन्हें हंसी और उन्हें रोना। ये अजब रंग मोहब्बत है कि पहले जो हंसता था वो रोता और जो रोता था वो हंसता। यहाँ पर हैं, just a minute, we've not finished. Dr. Azra, can you just come? We've not finished. आप लोगों को जाने की जल्दी, थोड़ा सा बस 2 मिनट और रुक जाइए. I'd like to invite Chairman NAPA से 𝗧𝗹𝗸𝗀 sahab up on stage.